So we will talk about division, and first we will talk about division of monomial by a monomial. Okay, so I will go each one step by step. Monomial by monomial. I don't know, my pen is, what is wrong with it? Monomial by a monomial. Now, when we are dividing monomial by a monomial, let us take an example. I'll take the examples which are given in the textbook itself. So, let us say it is 36a to the power 7 divided by minus 12a cube. Minus 12a cube. Okay, minus 12 cube. So, what you need to remember over here is the constants, they will divide on their own, right? So, 36 divided by minus 12, this will be minus 3. This much you should be able to know now. Your integers should be good enough for you to know, right, just by looking at this, that 36 divided by minus 12 would be minus 3. Now, here in division, what we are doing is, we are subtracting the powers. Why subtracting the powers? See, a to the power 7 means a into a. अरे भाई लिख जाओ. A into a into a into a into a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, and underneath it is 1, 2, 3 times. Okay, so 7 times and 3 times. So you are cancelling out 3 of them and you are left with 4, right, in the numerator, right? So this will be a to the power 4 in the numerator. So what we do is, you studied exponents, right? So law of exponents you studied na last year? Yes, ma'am. Yes, exponent says in division you subtract the powers. So you are simply subtracting 7 minus 3. Now suppose if it was like 36 a to the power 3 divided by minus 12 a to the power 7, then what will the answer be? Here it will be same as minus 3, but this minus 3 gets cancelled and you are left with divided by a to the power 4. This will be your answer. So that is what you need to be very careful about when you are doing divisions. So monomial by monomial is simply when you divide the constants and then you subtract this one. Yes, please. Is it necessary to write a to the power minus 4, or we can leave it like a to the power minus, you can write it this way as minus 3 a to the power minus 4, or you can write it minus 3 by a to the power 4. This is also okay. This is also correct. by dividing monomial by monomial, is it very important to separate out the variables and constants? No, separate. See, I am doing this because you have to, anyhow देखो 12 को तुम a to the power 7 को तुम 12 से तो नहीं डिवाइड कर सकते ना. कांस्टेंट से ही डिवाइड होगा, वेरिएबल से ही डिवाइड होगा. इसको ऐसे अलग अलग करके हम नहीं कर सकते हैं डिविजन. नाउ सपोज ही, that is why I am asking you, I am separating it this way, but answer में देखो एक साथ ही लिखा है मैंने, right? So the reason I am doing that is because I need you to understand first कि सबसे पहले क्या करना है. सबसे पहले constants को divide कर दो. Constants को divide करके फिर variables के ऊपर जाओ. Now यहाँ तो खाली एक ही variable है. Now suppose what if the question was like 36 a to the power 36 a to the power 7 b by minus 12 a to the power 3, right? A to the power 3. Suppose it was like this. The question was like this. A to the, यहाँ पर b है. तो अभी b को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, तो आंसर में हमारे आ जाएगा -3
ए टू, अब ये तो गया यहाँ से, ये कट गए हैं, यहाँ पे 4 बचा है, ए टू द पावर 4, और बी विल रिमेन जस्ट लाइक दैट. जो भी माइनस होंगे वो सब लाइक टर्म्स में ही होंगे. ए का ए से ही माइनस हो सकता है, बी से माइनस नहीं हो सकता. बी का बी से ही माइनस होगा, ए का ए में माइनस होगा, बी का बी में माइनस होगा. तो यहाँ तो बी और कुछ नहीं है, तो द आंसर विल बी लाइक दिस. आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Are you able to understand? Okay, just I'll test you out and let me see. Minus 42 a cube b square Is it c. 42 a cube? I'll write it. Yes, minus 42 a cube b square c divided by 6 a c. Can you give me the answer to this? ac square. Miss 7a square b ac square. square. I'll write it as ac square. minus 7a square b square. B square. Minus 7 square. Minus 7 square. Minus 7 Square b A square b square. square b a square. square. It's I'll minus put it as 7a c square square b underneath. square. By A square b B square Square. B b by square by c. by c. absolutely correct. Did everyone get this? सबको समझ में आया Yes, ये कैसे आया यहाँ? Yes, miss. Yes, बस miss. ये समझ में आ गया तब तो समझो पूरा डिवीजन समझ में आ गया. बिकॉज अगर मोनोमियल बाय मोनोमियल समझ आ गया ना, तो फिर तो और किसी चीज में प्रॉब्लम होगी ही नहीं. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू गेट एब्सोल्युटली बैंग ऑन. ये अगर अच्छे से समझ आ गया तो फिर इसके बाद और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, लेट अस नाउ टेक अप अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल. So binomial by a monomial. So यहाँ example दिया है. Let me use a different color. So the example given over here is 9a. अरे मेरा पेन. 9a to the power 5 minus 6a cube, 6a square, 6a square divided by 3a square. Oh भाई जी. Okay, so you get this. Now this is division of a binomial by a monomial. तो इसमें क्या करना है हमको? जैसे हमने मोनोमियल में किया था, exactly the same way we will do. We will take each term and we will divide it by a monomial. So what we are doing is, we are doing 9a to the power 5 by 3a square minus is this one 3a square minus 6a square by 3a square. Let me write this clearly. This pen is testing my patience. So ठीक वैसे ही जैसे हमने मोनोमियल के लिए किया था, वैसे ही हम इसको करेंगे. So remember that when you have a binomial or a polynomial that is there and it is being divided by a monomial, this entire thing needs to be divided by 3a square. So each term needs to be divided by 3a square. So इसको हम ऐसा करेंगे and then we will get the answer as 3a to the power 3 minus 2. This will be our answer. ये वाला इसको डिवाइड करने से आएगा. हमने पहले 9/3 किया तो हमारे पास 3 आया. अब यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, तो a3 बच गया, और इधर तो 3a स्क्वायर ही था, a स्क्वायर पूरा चला गया. 6/2 minus 6/3 that gives you 2. Okay, so binomial by monomial, are you clear on that? It is exactly similar to monomial by monomial, just that ये monomial जो है, ये जो divisor है, इसको दोनों के साथ हमको यूज करना है. 9a to the power 5 के साथ भी यूज करना है, इसके साथ भी यूज करना है. Okay, so let me test you out once again and see if you have understood it. So I'll give you a question and let it be 15 x cube y square minus 21 x
y cube divided by 3x square y square. Okay, do you get the question? 15x cube y cube divide minus 21x y cube divided by 3x square y square. So can you do this for me? Yes, ma'am, done. Yes, give me the Yes, miss, answer. done. Yes, miss. Give me the answer. 5x Miss, minus 5x 7y minus 5x square. 7y. minus 7y. 5x minus 5x minus 7y by 5x x minus 7y by x 7y by by x. x. Yes, this is what I was looking for. That's why I asked you about this. यहाँ देखो x का पावर न्यूमरेटर में कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है. So when you write it this way, let me show it to you in a different color. So अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 15, अरे भाई मेरा पेन लिखे तो 15x क्यूब y स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर y स्क्वायर. तो यहाँ पर या तो इसके हायर पावर्स हैं, तो ये हमने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया. y स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड एंड देर इज ओनली 1x लेफ्ट और यहाँ पर बचा 5. तो ये हमारा आ गया 5x. यहाँ पर माइनस 21xy क्यूब के नीचे, अरे अंतर ध्यान क्यों हो गया, डिसअपियरिंग क्यों है भाई, 3x स्क्वायर y स्क्वायर. राइट. सो यहाँ देखो, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो ये तो चलो -7 आ गया इससे. अभी यहाँ एक x है, यहाँ 2 है, तो इस ये वाला x चले जाएगा और यहाँ एक x बचा रह जाएगा इन द डिनोमिनेटर. y ये 2 चले जाएंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा, जिधर भी एक्स्ट्रा होता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वहीं पे उसको लिखना जरूरी है, इसको हम ऊपर नहीं ला सकते. यहाँ x कम था, यहाँ एक x ज़्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला है वो बच जाएगा. यहाँ y कम है, यहाँ ज़्यादा है, ये वाला डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ कितने एक्स्ट्रा है वो बच जाएगा. सो दैट इज़ हाउ वी कम अप टू this part. Okay, I'm happy that you have understood this. Miss, Yes, please. miss, if there is no brackets, then also we'll divide 3x square y square with both the terms. Yes. Even if there is no bracket, it simply means that you have to divide this entire expression, because it says na, the question says divide this by this. अगर ऐसा लिखा होता, खाली ये दिया होता, फिर उसके बाद लिखा होता, पहले ये लिखेंगे फिर लिखेंगे डिवाइड -1, देन ओनली दिस पार्ट यू विल से. बट डिवाइड इज रिटन राइट इन द बिगिनिंग. दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग विच फॉलोज आफ्टर डिवाइड, दिस एंटायर थिंग इज द डिविडेंड. ओके, सो एंटायर थिंग यू हैव टू टेक अप. यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट्स गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिवाइडिंग a polynomial by a polynomial. यहाँ आता है बड़ा भाई छोटा भाई का पार्ट. Okay, so let us take a simple one as it is given over here in your book. So it is, I am taking example 8x square minus 45. आप प्रकट होंगे प्रभु जी, कहाँ गया 45 माइनस 45 y स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 18xy. I hope you are able to understand. This is not equal to sign, please. This is minus sign, and you have to divide this by what? 2x minus 3y. Now the first and the foremost important thing to remember is, ये जो डिवाइड होगा ये पूरे टर्म से डिवाइड होगा, ये दोनों से डिवाइड होगा मिल करके. अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट राइट इट इन दिस वे. यहाँ हम स्प्लिट करके नहीं लिख सकते हैं. सो इट हैज़ टू फॉलो द लॉन्ग डिविजन मेथड. आई विल क्लियर जस्ट दिस पार्ट सो दैट वी गेट more space over here. Okay. Where did the cursor go?
This cursor disappears. अरे हाँ, यस. सो अब ये इसको हम ऐसे अलग अलग करके नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स हैं. सो वी कैन नॉट स्प्लिट दैट. So as I used to tell in my class 7B and 7C, those who studied with me, they know I call the first term as the बड़ा भाई and the second term as the छोटा भाई. तो बड़ा भाई छोटा भाई दोनों को एक साथ लेकर के चलना है and हमको पहाड़ चढ़ना होता है. So this is like the first पहाड़, then the second पहाड़, then the third पहाड़, last पहाड़, जब तक हम final पहाड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक. Okay, when we have considered all these terms that are there. So we will take this first one. और हमारा पर्पस होना चाहिए क्या, ये फर्स्ट पहाड़ जो है इसको पूरी तरह से गिरा देना है. मतलब वी हैव टू कैंसिल दिस आउट एंड वी हैव टू कैंसिल इट आउट विद द हेल्प ऑफ द बड़ा भाई. द बड़ा भाई इज द वन हु टेक्स चार्ज. सो कैंसिल आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, दोज हु आर गुड विद मैथमेटिक्स दे विल बी एबल टू डू इट ओरली, बट दोज हु आर नॉट दैट गुड, उनको क्या करना है, उनको देखना है ये 8x स्क्वायर ऐसे तुम लिख सकते हो बाय 2x. सो ये फर्स्ट वाला पहाड़ और बड़ा भाई. तो ये जो है इसको डिवाइड करने से हमको क्या आंसर मिलता है, यहाँ पे हमको मिलता है 4x. राइट. वी गेट 4x ओवर हियर. आई एम सो सॉरी माय पेन इज डिस्ट्रैक्टिंग टुडे. सो वी टेक इट एज 4x. यहाँ पर हम 4x लेते हैं. अब ये 4x जो है इसको बड़े भाई छोटे भाई दोनों को एक साथ लेकर के चलना है. तो 4x विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ दीज. सो 2x के साथ मल्टीप्लाई होने से तो ये डायरेक्टली आ गया 8x स्क्वायर. राइट, यहाँ पर ये हमको मिल गया 8x स्क्वायर. लेकिन यहाँ -3y के साथ भी हमको इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 4x के साथ जब हम -3y को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट -12xy. xy. Now one thing that a lot of students commit errors is they forget about these signs. यहाँ इसी साइन के साथ और इसी साइन के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है. So -3y into +4x will give you -12xy. तो इस लाइन में जो भी लिखा जाता है वो exactly what signs you get you write in these lines. So 2x प्लस था, 4x प्लस था, दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको +8x स्क्वायर मिला. तो यहाँ पर इसीलिए हमने प्लस लिखा है. राइट. अभी इसके नीचे हम साइन चेंज करते हैं बिकॉज वी आर सबट्रैक्टिंग इट. सो नाउ वी चेंज द साइन. दिस इज द साइन दैट वी गेट ओरिजिनली बाय मल्टीप्लाई एंड देन वी गेट द चेंज साइन. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधा. अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम नीचे वाला साइन लेते हैं, चेंज साइन वी टेक दैट. ये वाला इसके नीचे कुछ भी नहीं आया. सो ये सीधा का सीधा यहाँ से इट इज ब्रॉट डाउन. इसको ऐसा का ऐसा ही उतार के लिख देते हैं यहाँ पे. देयर नीड्स टू बी नो चेंज ओवर हियर. मेनी स्टूडेंट्स कमिट दिस एरर. वो जब साइन चेंज कर रहे होते हैं इसका भी साइन चेंज कर देते हैं. नो, जिसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कोई टर्म नहीं आया है, इट इज ब्रॉट डाउन जस्ट द वे इट इज. So if it is -45y square, it will not be brought down as +45y square. It will be brought down as -45y square only. Okay. अब यहाँ जब कैलकुलेशन होगी तो चेंज साइन के साथ कैलकुलेशन होगी. तो प्लस 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 विल बी प्लस. 18 + 12 is what? 30, right? So here it will be 30xy. आ गया अभी यहाँ पे. अब हमको यहाँ पर जो है वो बड़ा भाई इसको, अब यहाँ क्या है ये ऑर्डर. नाउ इन क्लास 7 द क्वेश्चंस दैट यू हैड स्ट्रेट अप ऑर्डर्स. यहाँ देखो यहाँ ऑर्डर चेंज हो गया. अब तुम बड़ा भाई बोलोगे कि कैसे किया जाएगा. अब बड़े भाई के पास x है और फर्स्ट ये टर्म जो इसके पास x तो नहीं, लेकिन इस टर्म के पास तो है ना x. तो ये टर्म हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा बड़े भाई की हेल्प से. राइट. और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द छोटा भाई ओवर. खाली y जिसके पास है उससे भी ले सकते हैं. इससे हमको कैंसिल आउट करना है. ये वाला टर्म कैंसिल आउट करना है हमको. ओके. सो व्हाट वी विल डू इज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, 30xy लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको +15y से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अरे प्रभु जी कहाँ गायब हो गए. इज इट शोइंग और इज इट नॉट शोइंग? +15 प्रभु जी थोड़ा देर से दर्शन दे रहे हैं, मालूम नहीं कुछ नाराज है वो शायद. तो appear the letters they appear in a while.
Okay, so 2x into plus 5y makes it what? Plus 30xy, and minus 3y into plus 15y gives you what? Minus 45y square, right? ये प्रभु जी आप दर्शन देंगे पूरे, या कि फिर हम कुछ और देखें इधर? x y, right? So this get cancelled, this get cancelled, and you are left with a 0. Now remember, now कभी कभी रिमाइंडर भी आ सकता है, तो हमेशा रिमाइंडर 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है. रिमाइंडर भी कभी कभी रिमाइंडर भी कभी कभी आ सकता है यहाँ पर. ओके, सो एज लॉन्ग एज, यहाँ पर हमको ये देखना है कि एज लॉन्ग एज ये जो दोनों पावर्स हैं, इनसे जब तक कोई छोटा पावर, ये जब तक बड़े पावर्स हैं तब तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं. बड़े या सेम पावर्स हैं तब तक ही हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं डिवाइड कर सकते. तो यहाँ देखो, यहाँ x का पावर 1 था, यहाँ भी x का पावर 1 था, इसीलिए हम डिवाइड कर सके. यहाँ यहाँ y का पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो ये जब तक छोटे हैं हम तब तक ही डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता और ऐसा आंसर आया होता यहाँ पर, देन दिस वुड हैव बीन द रिमाइंडर. हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पावर बड़ा आ गया इसका. सो दिस नीड्स टू बी द स्मॉलर पावर ऑलवेज. द डिवाइजर, जब तक डिवाइजर का पावर छोटा रहेगा, यहाँ जो भी रिमाइंडर आएगा उससे, तब तक हम डिवीजन कर सकते हैं. वंस द पावर ऑफ दिस बिकम्स हायर, वी विल नॉट बी एबल टू डिवाइड, क्योंकि यहाँ जब भी किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर जो है ये बड़ा ही आएगा, इसका सेम रहेगा या बड़ा आएगा. तो एज लॉन्ग एज the power remains the same or the smaller power, till that time we can keep on dividing. Okay, so let us solve this question from exercise 1D. Take this up, question number 1, bit number 7. Can you do this? Question number 1, bit number 7. I'll write the question over here. All of you have your textbooks with you? This is Yes, miss. 15. Oh, this pen is really worrying me a lot. I don't know what I need to change. Maybe I need to change the tab or the pen. I'm not so sure. 15 a cube b to the power 4 minus this question, right? 10 a to the power 4 b cube minus 25 Miss, the question is not visible. a cube. You can look it in your textbook. No, I'm copying it from the textbook. A cube b6. Ma'am, bit 7, right? Bit 7, yes. Bit 7 is this one, na? 15 a cube b to the power 4 minus 10 a to the power 4 b cube, Yes. minus 25 a cube b to the power 6, and this needs to be divided by minus 5 a cube b square, minus 5 a cube b square. My lettering will appear in a while. B square. Okay, this is the question. Yes, miss. Done. Done? Ma'am, done. Done? Yes, miss, done. Done. Done? Yes, miss. Anybody who is unable to do this, can you please send a dot in, I see a lot of things. Can you send a dot in the chat box so that I know that you are unable to do this? Yes, please. Instead of doing like this, we can do like by a doubt. This one, this is like this one you can do. Sorry. This one is by a monomial, so you can do it this way. Sorry, it will not be done. Oh, it will not be done in this way. You will do it separately. You can take each term separately and you can find out the answer. You can do it this way as well. Okay. Oh, I was talking about. Sorry. I was trying to give you a question on this one.
a binomial, but I thought let me test your monomial first. So monomial, everyone was able to do this? Or is there Yes, still Yes, ma'am. confusion about that? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us do the question, question number 11, bit 11. Let us do bit 11. It is 12x square, 12x square plus 7xy plus 7xy minus 12y square minus 12y square divided by, here you will take on this, divided by 3x plus 4y, yes, 3x plus 4y, this question. I'm sorry, this lettering is a bit distracted. I think I'll need to change my tab. Okay, will you be able to do this? Yes, mister. Yes, ma'am. Done. Done? Areva. Done, 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 done. So quick. Answer. Okay, let it be. Answer. Anyone who is okay, anyone who is unable to do this, can you please put up a dot in the chat box so that I know you are unable to follow this? Who is not at all able to do this? If you can put it up in the chat box. Okay, everyone able to do this? Yes. All right, let us try to solve this. So 3x is the bada bhai over here, and this is the first mountain that we are conquering over here. So 4x. to remove this, so yes, 4x. 4x will come over here, and in my board it is not coming, so it will be 12x square. Now do not forget this chota bhai. So 4x into 4y, it becomes what? Plus 16xy, right? So this becomes plus 16xy. Now let us take this up. This gets cancelled, and here the sign they will change. Minus 9x. So it will become minus 9xy. And remember, we will bring this down straight up because there was nothing over here underneath it. So this will be brought down as minus 12y square. Now again this y needs to go क्योंकि x है इसमें, तो x वाले term हम हटा सकते हैं यहाँ से. So what do we need to multiply it with? Minus 3y, and we get minus 9xy and plus 4. छोटे भाई को मत भूल जाना. Plus 4 into minus 3 will give you minus 12y square. Okay, so over here please प्रभु जी दर्शन दीजिए. minus 12y square कहाँ गायब हो गया? Thank you. So this gets cancelled, and again here your remainder is 0. Okay, so that is how you solve these division questions, right? And for verification, this, see, you can see the formula which is given over here is dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. That gives you the dividend. Okay.